But then I think in 2021 the news came up. वो हमारे बीच नहीं रहे and I cried a lot. मैं इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूँ. मैंने उनको ही इन्विजन किया था कि यही मेरे रुद्र बने. I have one name for Carl's character and I have a nod from that actor itself कि हाँ let's do it, and it is Amit Saad and Vidyut Jamwal for Rudra because he has a range. His physique supports the character. तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है. उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा गया होगा. तो सबसे पहले अपने गेस्ट से चाहूंगा कि वो हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. Hi Mohit. So मेरा नाम प्रणय भालेराव है and I'm an author of 3 books. वैसे देखा जाए तो 5 books if we consider the Hindi version as well. So Lost World trilogy, Kavaach trilogy, and now going to be the 3rd book is going to come next year. Profession, if I talk about profession, I'm a software engineer working with T-Systems full time, and by the evening I'm a writer. So I do also write screenplays for short films. Me and my friend, we are exploring that area as well. So yeah, that's about me, the software engineer and the author. तो मैंने आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी. तो यू वन 9 अवार्ड्स इंक्लूडिंग द इंडिया प्राइम बेस्ट रिसर्च अवार्ड. तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, थोड़ा अवार्ड्स के बारे में कि कैसा एक्सपीरियंस था आपका. It happened during COVID time. मैंने अपने लॉस्ट वर्ल्ड डेलॉजी पब्लिश कर चुकी थी and I was searching for marketing in my book, and there was this one invitation that came from NetX, and they said that okay, we'll like to nominate your book and you as well, but we'll need to read your books and everything, all that stuff. So I said okay, good invitation aa raha hai udhar se, to why not, let's give it a try. And then after a month or two I got the email that okay, you are nominated for the researcher award, because the Lost World trilogy contain a lot of aspects of tribal life, the uncontacted tribe. So I had to read a lot, research a lot, bits and pieces here and there. So I got an email from them that you are nominated, and after a month or so they said that you are an awardee. And because it was a time of COVID and lockdown, active lockdown was there, so everything happened virtually itself. So they sent me the trophies and everything. I don't have it here now. I have it in my hometown. My mom and dad proudly displays it in their shelf, and I'm not allowed to touch it. So yeah, so it happened like that only. Just a mail one day, and I happened to click it, fill all the details. Okay, तो आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मतलब यू हैव टू बिकम अ राइटर? उसके पीछे की आइडिया क्या था? देखो, इसके पीछे का आइडिया यार, इट डेट्स बैक अ लॉट इन माय चाइल्डहुड. बचपन का वो फितूर है. और जब बचपन में जब हम स्कूल में थे, तो मेरे जो दोस्त थे एंड टीचर्स एज वेल, थैंकफुली वेर सो हेल्पफुल, एंड ऑल्सो दे यूज्ड टू स्पॉट टैलेंट्स. जिससे मैं और मेरा दोस्त कल्चरल एक्टिविटीज में काफी पार्टिसिपेट करते थे. एंड we used to dance, we used to act in plays, we used to perform solo acts as well. Sometimes we used to write, but उस वक्त वो maturity नहीं थी, तो कुछ भी लिख दिया करते थे, cartoonish type. But then it grew over the time. And after engineering, when I was doing my job, typical 9 to 5 job as people say, मुझे लगा something is missing inside. I was not finding myself. I didn't see the sense of purpose as well. So दिन ऐसे ही मेरे दोस्त के यहाँ पे था, and he said that why are you so down and all that stuff. So I told him everything, and he just casually opened his cupboard, and there were a lot of books, and he said pick anyone and start reading. And that was the time when I was reintroduced to this creativity after a slump of so many years after engineering. And I understood that okay, this is something that I would like to do. I made tale stories.
format I didn't knew. Maybe I would make videos, मैं कुछ वीडियो बनाऊँ या फिर कुछ एडिटिंग के थ्रू करूँ या फिर लिख लूँ, राइट? सो ये प्लेटफॉर्म मुझे पता नहीं था. देन आई स्लोली स्टार्टेड researching, reading, and after reading I understood that okay, this is where I belong to, this is what I am. So I started a blog, and first started with fiction, then turned it into a technical blog, and then in between there was fiction, and then like that I started writing a book, and then the Lost World and the Kavaach trilogy happened. तो कैन यू वॉक अस थ्रू द राइटिंग प्रोसेस कि लिखते वक्त क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करते हो, क्या क्या मतलब कुछ ना कुछ आपको नई चीज सीखने को मिलती होगी, तो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बता सकते हो डिटेल में? Process काफी complicated if you think through this, but so the first step in any process, writing a book, is to settle for an idea. जब मैं कहता हूँ कि settle for an idea, किसी भी एक बुक का या फिर किसी भी कहानी का एक सेंट्रल थीम होता है. व्हाट इज द आइडिया ऑफ दैट थीम, राइट? सो यू हैव टू सेटल फॉर दैट. जब तक आप उसी थीम को एज अ फाइनल थीम नहीं कंसिडर करते, यू कैन नॉट गो अबाउट राइटिंग और रिसर्चिंग अबाउट द टॉपिक. So for example, if I talk about the Kavaach trilogy, the central idea of the Kavaach trilogy was कि what if कोई कर्ण का कवच इस टाइम एरा में यूज करे, एंड दैट पर्सन हु इज यूजिंग इज एविल. सो evil यूज करेगा, बट what is the location of the कवच and what not. This was the hook for us. So we settled down for that idea. So first thing is to settle down the idea. The second thing would be to draw the characters. Your story cannot, you cannot tell a story without characters. So आपके कैरेक्टर लाइकेबल होने चाहिए, प्लस आपके कैरेक्टर्स जो है वो रियल लाइफ से मेल खाने चाहिए. पीपल कैन रिलेट टू दैट कैरेक्टर्स. ज़्यादा क्लीशेड कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, राइट? सो यू हैव टू फर्स्ट देन सेटल फॉर द कैरेक्टर्स. और ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं चाहिए होते फॉर बिगिनिंग. Protagonist, antagonist would be with your protagonist, would be with your antagonist. ये एक बार आपका फाइनल हो गया, then there is this 3-act structure. When I say this 3-act structure, this happens for everything, even for the small videos, movies, or even the books, or even the podcasts. So आपकी story, what would be the middle part कि जहाँ पे आप एक conflict introduce करोगे, and then that conflict rises, and then ultimate satisfaction in the third act. So that has to be settled down. And then you have to go down and keep writing, and then discuss this idea with people. Because you cannot, आप ये नहीं कह सकते कि मैं खुद लिखूंगा and then I'll only review it and I'll publish it. No, that is a recipe for disaster. So you distribute your chapters, whatever you have written, to different people, and then when they read it, go through it, you get the feedbacks, and then edit, go back and edit it. Once you've done that, take a break. I usually do it. I don't know about the others, but I do take a break. And after that break, I again go visit the book, whatever I've written. I try to visualize, is it the story that I wanted to tell? And if the answer is yes, then this is the manuscript that I would be editing for the final draft. So yeah, this is the thing. Yeah, I mean, draw the plot points. First, settle for the idea. Second, draw your character arcs. Third, work on your three-phase structure of your story. Do your research then. For example, for Kavaach, I had to research a lot about the Mahabharata characters. What happened after Mahabharata, and what is the dynamics of Kavaach. So I had to research them. So research, and that would include traveling, reading, and all that stuff. But that is for me, that what works for me. For others, किसी और के लिए कुछ और काम करेगा. तो हाउ डू यू अप्रोच डेवलपिंग कैरेक्टर्स और एक कंपेलिंग स्टोरी लाइन को क्रिएट करना, मतलब किस तरीके से वो अप्रोच करते हैं इन चीज़ों को? एक कैरेक्टर डेवलपमेंट आपके स्टोरी से ही निकलता है, राइट? What I believe is, and I really follow this philosophy,
कि कैरेक्टर एक ही है, इट्स जस्ट दैट वो एक रास्ते में चल रहा है, और अगर उसने लेफ्ट ले लिया तो मे बी, अगर मैं अपने बुक्स कॉन्टेक्स्ट में कह दूँ कि वो कैरेक्टर चल रहा है और उसने अगर लेफ्ट ले लिया तो ही वुड बी, उसको वो लॉस्ट वर्ल्ड का यूनिवर्स दिख जाएगा। अगर उसने लेफ्ट ले लिया, सॉरी राइट ले लिया, लेफ्ट ले लिया, डिफरेंट डायरेक्शन ले ली, तो उसे कवच ट्रिलॉजी दिख जाएगा। सो कैरेक्टर एक ही है, इट्स जस्ट दैट हमें उस कैरेक्टर को उस यूनिवर्स में रखना है, एंड देखना है किस तरह से होगा। सो ये ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आप थोड़ा, आपको थोड़ा पागल होना पड़ेगा इसको इमेजिन करने के लिए ना, कि एक कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल मोहित मेरे पास है। सो I'll study मोहित, I'll watch you, I'll see कि आप कैसे हो on camera, in front of camera, in personal life, with your friends, with your family, and with your colleagues. There are different characters that we play. Same in characters का भी होता है. So I'll study कि आप कैसे हो, and then I'll see कि यार ये कैरेक्टर है वो मेरे इस कवच ट्रिलॉजी के यूनिवर्स में कहाँ फिट बैठ सकता है, हाउ मच आई कैन चेंज, मैं कितना इस कैरेक्टर को बदल सकता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। सो ऑलवेज जब भी मैं एक हीरो के बारे में सोचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कवच ट्रिलॉजी में रुद्र, जब भी मैं रुद्र के बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, जब भी काल के बारे में सोचता हूँ मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि वेन एवर आई थॉट ऑफ रुद्र, तो मैं ये सोचूंगा कि सबसे बेस्ट मैंने अपने कैरेक्टर में कब था, एंड देन आई विल इमेजिन दैट एंड आई विल ट्राई टू फिगर आउट कुछ एक दो पॉइंट्स लूंगा। देन आई वुड हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल, उनसे थोड़ा सा कैरेक्टर, यू नो, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। सो मेरे ख्याल से कैरेक्टर एक ही है, बस वो कैरेक्टर जो है वो सीखता जाता है। हर एक क्रिएटर के दिमाग में एक कैरेक्टर हो और वो हमेशा सीखता जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि वो क्रिएटर जो है उस कैरेक्टर का, वो किस रास्ते पे उसे ले जाता है। टू गिव अ बेस्ट एग्जांपल, हैव यू वॉच्ड इम्तियाज अली फिल्मोग्राफी? I think little bit. Imtiaz Ali's, if Not yeah, very if you much. see Imtiaz Ali's filmography as well, if we draw parallels, उनका जब वी मेट कंसिडर करते हैं, उनका तमाशा कंसिडर करते हैं, और उनका लव आजकल कंसिडर करते हैं। वो तीन तीन स्टोरी, डिफरेंट स्टोरी, बट द क्रिएटर इज सेम। अगर गीत की ट्रेन नहीं छूटती है, करीना कपूर के कैरेक्टर की ट्रेन नहीं छूटती है, तो शी माइट बिकम तारा फ्रॉम तमाशा, और अदर कैरेक्टर आई डोंट नो, लव आजकल वाला कैरेक्टर बन सकता है। इफ उसने ट्रेन मिस कर दी तो उसने वो गीत बनी। अगर उसी कहानी में उसने दूसरी ट्रेन मिस नहीं की और उसने वो ट्रेन में बैठ के जब शाहिद कपूर उसको छोड़ता है, तो मे बी वो तमाशा की कहानी बन जाएगी, लव आजकल की कहानी बन जाएगी। वो डिफरेंट हो सकता है। सो ऑन दैट सेम नोट, एक कैरेक्टर एक ही होता है, इट्स ऑल अबाउट जर्नी। डिफरेंट फेज होंगे, वो एक जर्नी होगी, एंड दैट्स व्हेन यू हैव टू प्लॉट दोस कैरेक्टर इन योर यूनिवर्स दैट यू हैव क्रिएटेड। सो आई थिंक दिस इज हाउ आई गो। आई डोंट नो इफ इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसेस से चलता है नहीं चलता है, बट इफ इट इज वर्किंग फॉर मी, आई थिंक फैंटास्टिक। Basically, you're trying to say every outcome leads to a Yeah. new story. Everything leads to a new story. Okay. Okay. Are there any authors या books जिसका आपकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा हो? जैसे आप एक ऑथर हो, एक राइटर भी हो, तो उस प्रोसेस में आपको बहुत हेल्प हुई हो उस चीज़ की? हाँ, काफी सारी किताबें हैं यार, बट द मोस्ट दैट हेल्प मी आउट इज शिवा ट्रिलॉजी बाय अमीश त्रिपाठी, बिकॉज आई एम ऑल्सो, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। तो जब मुझे पता चला कि देयर इज अ बुक अबाउट लॉर्ड शिव, और आई स्टार्टेड रीडिंग इट, एंड जब मैं किताब लिखने वाला था उससे पहले भी मैंने शिवा ट्रिलॉजी काफ़ी बार पढ़ी है। ऑलमोस्ट आई वुड से 6 टाइम्स आई हैव रेड शिवा ट्रिलॉजी। सो उस किताब में कुछ तो है यार, आई मीन आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट जब भी भगवान शिव के बारे में, इन जनरल भगवान शिव के बारे में जब भी पढ़ते हैं, तब ऐसा होता है कि यार कुछ तो देयर इज अ डिवाइन इंटरवेंशन है, आई वुड से। तो it helped me a lot, and the thoughts would flow, there would be a lot of inspirations that would come in.
But if you consider these are the fiction, right? But if you consider something which is non-fiction or something which is related to us, so Mahabharat, the written text, those 7 volumes helped me a lot. And I often revisit those volumes whenever I need something. I often revisit, Bhagavad Gita whenever I need something. Bhagwan Shiv ki kahani to hai hi. So these are the books that I keep handy whenever I'm down or when I want some inspiration to write. I would go back to these books. Actually, there's a term called creative block. हर एक राइटर को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है. तो आपने ये प्रॉब्लम कितनी फेस किया है और किस तरीके से आप इस चीज़ को ओवरकम करते हो? ठीक है, मैंने फेस तो बहुत किया है, टू बी रियली ऑनेस्ट. मैंने अब तक 5 किताबें लिखी है. आई थिंक आई हैव फेस्ड इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. आफ्टर एवरी major block, I faced it. Currently, actually, to be really honest, I'm going through that. The creative block. Not the creative block, I would say, because I know how the story would progress. But there are a few times when you don't feel like writing. Right? You feel like you are completely hollow from inside, and there's nothing to give. And that fear, I would say, or that disappointment that you are not able to give your 100% to the thing that you are passionate about. I think that's when I face the creative block. So there are a few ways that I follow in order to get out of that creative block. And one of them is to cut myself away from this creativity. May sound weird, but this is what I do, because if you do something on a repeated basis, daily, it becomes monotonous, no matter how interesting that is. So it's always there. People say leisure break from work. So I take this leisure break from my creativity. So I take this break from creativity. I would consume a lot of content. I'll consume a lot of Netflix, a lot of Amazon Prime for a week at least. I would go out. I will eat a lot. There's nothing for diet at that time. I'll eat everything. After a week, I'll consume a lot of content via books that I have. I'll give a break to Indian mythology. I'll explore a lot of classic literature, I would say. I'd go roam around bookstores and spend hours there, without reading, without purchasing anything, and just looking at the covers, just looking at the people, just observing them. And after that, I'll just go to Lord Shiva's temple. There's this one Baneshwar temple which dates back to Mahabharata's era. So I'll just go there, touch my head there, spend some time, come back, and I'll just go through whatever I've written. And then suddenly thoughts will come out. So ye mera process. This is the process that I follow to get out of that creative slump. Doing nothing when you feel nothing's happening, nothing's coming out, then it's better to let that go. And then come back rejuvenated and start writing again. So this has been my process. Sometimes what I do is I just stop it. Stop everything. I won't consume anything. I won't go anywhere. I'll just stop it and I'll switch to an entirely different role. What I'll do is I'll start shooting some videos. The creatives, you may say creatives, or the short films and everything that I have written some time back in the past. So I'll start shooting that. I'll start exploring that area as well. And during that process, sometime happens that creative slump has gone. So, and I'm back on track. So yeah, that has been the process. Okay. So how do you maintain the balance between a compelling narrative story and also the factual accuracy, especially non-fiction works? See, when it comes to factual accuracy, it has to be, the accuracy has to be for the facts that we are using. We cannot say that we can create a city, we can create a country, it's everything. But whenever you are referencing anything regarding Indian history,
you cannot go wrong there. You cannot claim anything that is not factually correct, and you also know it, and people know it. So to maintain the balance, the only thing that people can do, and authors like me and everyone around the world does, is to do their fair share of research. Read a lot of books, consume a lot of content in that area, and that's in that genre that you are trying to read or write. Consume a lot of content, create the data, collect data, a factual data, and try to see if it fits. If it doesn't fit, probably you should not use it. And because I'm a fictional writer, I can bend the world with the words. And I can create the world. So it is not a pressure as such to reference those factual things. But because when we are talking about Karna's Kavaach, and there is a lot of references to the Mahabharata, our history, then it becomes very important for me to research and also be careful while writing a manuscript, that okay, if you are referencing something, it should have a a backing of facts. ओके, तो आप जितने भी एस्पायरिंग राइटर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? The one advice that I had also received, मुझे भी एडवाइस मिला था, और वो एडवाइस है कि पढ़ो. जितना ज़्यादा आप लिटरेचर कंज्यूम करोगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा. that how different kind of stories shape differently. So यही है यार एक एडवाइस कि keep reading and then keep writing. Don't stop. And never publish your first manuscript, first draft. That is for you. That is for the world to criticize. And then only after you have been criticized, go back, second, third, fourth draft, and then publish. ओके, थोड़ी सी पब्लिशिंग के बारे में अगर बात कर लेते हैं, उस प्रोसेस के बारे में. कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद द पब्लिशिंग प्रोसेस, और हाउ डिड यू फाइंड अ एजेंट और पब्लिशर? First thing, it's a tedious process यार, publishing. काफी अलग दुनिया है publishing की. If you're no one, if you don't have any presence digitally or physically, when I say digitally, of course, if you have a digital presence on Instagram, you have quite a good following, and you're something on social media, then it will get a little easier. If you don't have that digital presence and you have physical presence, I mean, you are someone of the authority, some CEO or something like that, you own a multi-millionaire company or something like that, then it becomes easy for you. But if you're no one, like me, I'm no one, I was no one. So it becomes very difficult for you to get that, publication house to get you published. So I don't have any agent. I don't have any publication house as such, who publishes my book. It's all by me. I self-publish my books. And I have found a publisher for the Hindi version, but only after 2 years of publication. I mean, more than that, I became something. So this process takes a lot of time. First, you need to mail your manuscript to, I don't know, whichever publication house you aim to publish from. They'll take a lot of time. And of course, it's understandable, because if you are a good publication house, a traditional publication house, they'll take a lot of time to review your content. And they are very choosy about the content that someone who's unknown is giving them. A lot of publication house doesn't even consider this unsolicited publication queries. They need a good literary agent. So it's a big journey. And if some publication house even agrees to publish it, their terms and condition would dry your pockets. They'll mint money out of you. They won't mint money out of the sales. So that is one thing. So that's why, after knowing everything, rejecting from a lot of publication house, Penguin rejected me, Srishti Publication rejected me, HarperCollins rejected me, Westland rejected me. So after every rejections, I thought, let's take a self-publication route. So the best platform that would be
पॉसिबल दैट वाज पॉसिबल, जो भी पॉसिबल था उस वक्त मैंने वो किया. एंड नाउ आई नो क्या होता है एक कॉपी का प्राइस कितना होता है व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द प्रिंट प्रेस, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए. सो आई एम प्लानिंग टू लॉन्च माय ओन, but it will take time. There are a lot of things that needs to be taken care of. But if you are publishing a book, anyone wants to publish a book, there are two things that you need to, that is in your control, and that is your work. ठीक है. जब मैं बोलता हूँ कि आपका काम आपके पास है, it's just that is the only thing जो आपके पास है, जो आप उसको पॉलिश कर सकते हो. The better it is, the best it would be. तो आपको फिर फर्क नहीं पड़ेगा कौन से पब्लिकेशन हाउस को पब्लिश कर रहा है, इफ यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ. सेकंड थिंग इन पब्लिकेशन इज द कवर ऑफ द बुक. देयर इज अ पॉपुलर सेइंग, आपको भी पता होगा मोहित, दैट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट? बट द फैक्ट इज एवरीबॉडी जजेस द बुक बाय इट्स कवर, राइट? द highly attentive detailed cover you have, the more the chances of your book to be discovered. अगर आपका अंडरवेलमिंग सा कवर होगा, सो nobody will give anything about, nobody will care about your book. But if you have a very striking book cover, that people are coming back to see your cover only, that okay, what a great cover, yeah, then it increases the chances of sales. So two things that are in your control if you're going any publication route, maybe traditional self, is the quality of your manuscript. Make sure your manuscript is the best that you have, and make sure that you have at least 4 to 5 iterations of your cover, that if this doesn't work, this will work, this will work. So go any route, and if you only want to get published by these top 5 publication house, patience is the key. It will take at least years to publish. So this has been my experience with the publication journey. Yeah. Oh, sorry. Okay. Have you ever feel कि आफ्टर राइटिंग आपने पूरी बुक कंप्लीट कर दी, उसके बाद लगा कि यार इस बुक में और काम हो सकता है, मतलब क्योंकि एज एन आर्टिस्ट और एज एन राइटर आप कभी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते, तो ऐसा फील होता है कि यार थोड़ा और टाइम दे देते हैं. उसके चक्कर में क्या होता है कि प्रॉपर टाइम में बुक को लॉन्च करना भी ज़रूरी होता है. तो इन चीज़ों को किस तरह के, वो माइंडसेट क्या होता है, थॉट प्रोसेस क्या होता है उस चीज़ का? ये तो हर एक चीज़ के लिए लगता है कि मे बी कुछ और थोड़ा हो सकता था, इसको और कुछ कर सकते थे. तो ये भी काफ़ी बार हुआ है, स्पेशली इन दी सेकेंड बुक आई विल शो यू. इन दिस बुक प्रोटेक्टेड राक्षसा काल, तो ये बुक के वक्त मुझे हुआ था, आई हैड इनिशियली गिवन दी चोजन, मैंने बोल रहा हूँ मैं, बट जून जुलाई का कुछ तो ऐसा डेट दिया था इस साल का पब्लिकेशन. बट व्हेन इट फिनिश्ड मुझे लगा नहीं, कुछ तो मिसिंग है, नहीं, दैट फीलिंग नहीं आ रही थी. सब कुछ एडिट हो गया था, सब कुछ हो गया था, एवरीथिंग वाज रेडी, कवर वाज रेडी, सब कुछ था, बस अभी है इसको प्रिंट कराना है एंड अवेलेबल कराना है, दैट्स इट. सो आई सेड नहीं यार, कुछ समथिंग इज मिसिंग. सो देन आई हैड टू गो बैक, रीड अगेन एंड ऐड सम एडिट्स. तो वो चीज़ होती है. अभी अगर मुझे ऐसा किसी ने बोला कि यार चल इस पे रीवर्क करते हैं, so I'll find a lot of things that may not कि मुझे ऐसा लगे कि ये नहीं रहना चाहिए इसमें. So I think as an artist, yes, हर एक चीज में वो लगता है कि थोड़ा सा हो जाना चाहिए, थोड़ा ऐसा कर देना चाहिए था, थोड़ा ये यहाँ कर देना, थोड़ा यहाँ पे शैडो आनी चाहिए थी, थोड़ा ना एक और फिलोसफी लिख देनी चाहिए थी वहाँ पे. तो वो होता है. बट एक माइंडसेट ऐसा होता है कि when it's published, right, you have to own that thing. तो बिफोर पब्लिशिंग मैं एक करता हूँ कि मैं आई गिव इट टू द पीपल हु कुड गिव मी द ब्रूटली ऑनेस्ट फीडबैक. अगर वहाँ से थम्स अप आया तो दैट मीन्स कि यू आर डन गुड जॉब. या तो यही होता है कि जब भी कोई काम होता है, कोई भी किताब होती है जो फिनिश हो जाती है, तो मैं उनको भेज देता हूँ. सो it takes almost 1.5 month. उस वक्त तक काफ़ी वक्त मिल जाता है खुद को भी एनालाइज करने में क्या हो रहा है. एंड
टू बी रियली ऑनेस्ट, जब भी कुछ मैं एज अ क्रिएटर, नॉट just an author, but as a creator, if you've seen my Instagram account, so I do create a lot of creatives, videos, reels and everything. um, जब भी मैं वो बनाता हूँ तो फर्स्ट द माइंडसेट इज कि यार आई हैव दिस स्टोरी टेलिंग स्टोरी लाइन, राइट, एंड दिस इज अ स्क्रिप्ट एंड आई हैव टू गो बाय दिस स्क्रिप्ट. और अगर वो आउटकम नहीं होता है अच्छा, तो कि मैंने सोचा था ऐसा होना चाहिए था और वैसा नहीं हुआ, सो व्हाट आई डू इज आई गो बैक अगेन, आई डू इट अगेन. अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके, मैं वो छोड़ देता हूँ, राइट. दैट कैन बी यूटिलाइज समवेयर एल्स, बिकॉज मे बी उस सब्जेक्ट को हैंडल करने की मैच्योरिटी उस वक्त नहीं होगी, बट डाउन द लाइन कभी ना कभी तो आ जाएगी. सो ये एक थॉट प्रोसेस रहता है. और एज अ क्रिएटर आपको पता ही चल जाता है जब आप वो बना देते हो तो कैसा बना है. इफ नॉट जब बनाया उसी वक्त नहीं पता चलेगा, बट डाउन द लाइन 1 day 2 day आफ्टर अ वीक वो पता चल जाता है कि यार नहीं, ये थोड़ा ना गलत हो गया. एंड देन यू लर्न एंड देन यू गो बैक अगेन एंड सेकेंड टाइम आप बेटर क्रिएट करते हो कुछ. सो यही एक थॉट प्रोसेस रहता है कि वेन एवर यू आर वर्किंग यू वर्क बेस्ट. इट्स अप टू द ऑडियंसेस टू लाइक इट और नॉट. इफ दे आर लाइकिंग इट देन इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो भी नेक्स्ट करोगे वो इससे बेटर होना चाहिए. इवन इफ दे डोंट लाइक इट, इससे बेटर ही होना चाहिए. सो एवरी टाइम आई गो टू वर्क, every time I work on any manuscript, any creative, I go with the belief that I'll create something very good, something best out of it. Maybe नहीं होगा, लेकिन एक बिलीफ है कि खुद को बिलीव करते रहना चाहिए. So that has been the mindset. और ये तो लगता रहेगा यार, I mean, हमेशा कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं वैसा हो जाना चाहिए था, तो होता ही है. अगर आपकी बुक के ऊपर एक मूवी बने तो आप एज एन कास्टिंग डायरेक्टर, अगर आपको कास्टिंग डायरेक्टर बना दिया जाए तो आप किस एक्टर को कास्ट करोगे इस फिल्म में? यार मोहित, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार मैनिफेस्ट किया है कि कोई मुझसे ये पूछेगा, है ना. तो जब मैंने कवच ट्रिलॉजी लिखी थी तो मेरे मेरे जहन में एक ही एक्टर था फॉर द रोल ऑफ रुद्र. सिर्फ एक ही एक्टर था और उनके अलावा मैं किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकता था. बट देन आई थिंक इन 2021 the news came up, वो हमारे बीच नहीं रहे, एंड आई cried a lot. मैं इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूँ. मैंने उनको ही इन्विजन किया था कि यही मेरे रुद्र बनेंगे, बिकॉज आई फाउंड वेरी सिमिलरिटीज बिटवीन हिम, मी एंड रुद्र. तीनों भगवान शिव के भक्त थे. एंड आई डोंट नो, आई कैन पुट इट इन वर्ड्स, बट मैंने उनको ही इमेजिन किया था. वो जहाँ भी है उनको वो सुखी रहे, यही दुआ है. और उस वक्त तक मैंने तो लिखी भी नहीं थी, इट वाज जस्ट इन माय हेड. बट जो हुआ उसको बदल नहीं सकते अभी, तो वी हैव टू मूव ऑन. बट इफ यू आस्क मी नाउ कि कास्ट कैसा रहेगा, आई हैव वन नेम फॉर कार्ल्स कैरेक्टर एंड आई हैव अ नॉड फ्रॉम दैट एक्टर इटसेल्फ कि हाँ, लेट्स डू इट, एंड इट इज अमित साध. So Amit Saad sir for Karl's character, and Vidyut Jamwal for Rudra, because he has a range. His physique supports the character. So ये दो कैरेक्टर तो मेरे दिमाग में हैं. इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. For Shaurya's character, which takes place in the current timeline, who is fierce as well. I think for that character, I go for Bobby Deol. After watching his looks and performance in Animal, I think yes, for that character, it's Bobby Deol. For there are a lot of characters here. I mean, Saoirse's character can be done by. Yeah, it's a tough job, यार. Even thinking, हम ऐसे ही बोल देते हैं कि इसने कैसे कास्ट कर लिया. It's a tough job. सहर्षि महंत के कैरेक्टर के लिए आई थिंक पंकज त्रिपाठी जी बेस्ट रहेंगे.
बेस्ट रहेंगे यार, या. एंड फॉर रवि's कैरेक्टर, जो हमारा साइड किक है, who is also has a superpowers by the way. और उनके लिए रवि का कैरेक्टर, बट फॉर तानिया's कैरेक्टर, I think for Tanya's character, yes, I think the okay, this is tough. Kiara Advani for Tanya's character, and for Tina's character, I think we can go for someone who is fierce. Of course, I think Tina. Oh, sorry, Tina's character, it would be Deepika. Uh, for Shakshit's character, I think if at all possible, John Abraham. तो बेसिकली काम मुश्किल ही है कास्टिंग डायरेक्टर को छोड़ देते हैं। ये काम उन पे है, उन पे छोड़ देते हैं. फोकस ऑन राइटिंग कैरेक्टर्स. ओके, तो थोड़ा सा मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब रेजोनेंस के रिगार्डिंग है, जो आपने थीम की बात की थी ना थोड़ी देर पहले, उसी से रिलेटेड है मेरा. तो हाउ डू यू सी द थीम्स ऑफ योर बुक रेजोनेटिंग विद द फ्यूचर जनरेशन, और क्या इम्पैक्ट वो उनके दिमाग पे छोड़ के जाएगा? सो मैंने जो किताब लिखी थी, सो आई वांटेड टू गिव इट अ बियॉन्ड बुक एक्सपीरियंस. मैंने इसी थॉट से लिखी थी कि लेट्स गिव इट अ बियॉन्ड बुक एक्सपीरियंस and let's entertain people with the book. So when they would be reading my book, they should visualize what is going on. But एक किताब ना इसी एक मोटो पे नहीं चलेगी. It has to have a message. There has to be some takeouts. So what my book will give them is a lot of information about Mahabharata, right? A lot of information about Lord Shiva, how to revere, how Lord Shiva is, what Lord Shiva is. Also will give a lot of insights about your life itself, that not everybody that you see is good, not everybody that you see is evil. There are two sides to the coins, right? It will talk about dharma, adharma. So for the future generation who would be reading my book, they'll get to know a lot about our culture, our heritage, our history. They'll also get to know a lot about these Harappa, Mohenjo-daro civilizations as well. Why this book? Because it talks a lot about it as well. So yeah, about Mahabharata, about Lord Shiva, about our culture, religion, about respect as well, that how to respect different beliefs, how to respect different individuals, dreams of different individuals. And at the end, it will tell us that your dharma may be your dharma. When I say dharma, it's not about religion, it's about dharma. As in, my dharma as an author is to write a good story, right? Your dharma as a reader is to read and give an unbiased opinion about if you liked it or not, like that. So once someone's dharma may not be dharma for someone else. It may be adharma for them. And someone's adharma may be dharma for someone. I have mentioned a brief about this in the book as well. So it will give a lot of insights about the life itself, the culture, the history, the heritage, and about our gods as well, where we have our beliefs from. And it will teach a lot of love and friendship as well. So it has everything. So takeout is this, I think, rather than this beyond book experience. ओके, ड्यूरिंग योर रिसर्च, जब भी आप कोई बुक के बारे में रिसर्च करते हो, किसी भी कैरेक्टर के बारे में, डिड यू कम अक्रॉस एनी थिंग जो आपको फैसिनेटिंग लगे हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, लेकिन उसके ड्यू टू कहते हैं कि फैक्ट्स की कमी के कारण, कि पूरी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से आप उसको लिख नहीं सकते, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ? ऐसा किसी कैरेक्टर के साथ तो नहीं हुआ है, बट इन दिस बुक इटसेल्फ वी थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ. तो उसके अराउंड बहुत पूरी कहानी, पूरी ट्रिलॉजी उसके अराउंड बनाई गई थी. द फर्स्ट ड्राफ्ट, द आर्क एंड वो द 3D आर्क स्ट्रक्चर होता है, वो सब कुछ उसी के अराउंड बनाया गया था. एवरीबडी लव्ड इट, जितने भी थे, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल द बीटा रीडर्स, जितने भी थे, मतलब एवरीबडी लव्ड इट.
we started writing it as well, and we used to take a lot of calls like these on Discords and everything. In your group of friends में ऐसा कुछ था नहीं अलग से. After a month, a friend of mine said कि जम नहीं रहा है. The story is so grounded, एक grounded way में चल रही है, with the reality, the feeling, इसकी पूरा world building जो है पूरा reality के साथ चल रहा है. And then of course mystical elements है, because mythological fiction है, fantasy fiction है, there would be mystical elements. But those mystical elements, those superheroes, super villains are vulnerable as well. Are getting beaten up, are getting defeated, will be getting defeated, will be winning. They have a goal. They are very short-sighted. एक ही goal है उनके पास. Introducing Lord Shiva himself dilute कर जाएगा चीजों को. That realism से वो एकदम से shoot कर जाएगा. And that the book will bomb. So we gave it a thought, and no matter how compelling it thought, there were like 50 pages that I had written around Lord Shiva himself being actually present in this universe, coming to the aid of people and taking the center stage and everything. I went through those pages. It felt so fascinating. I was itching to add those, 50 odd pages in the book, that I said, I'll add it somewhere. कुछ तो करते हैं यार इसके बारे में. But at the end, we had to drop it because practicality भी देखनी होती है. We cannot let the project bomb because of our own fantasies. तो वो हुआ था, and this is the only thing that happened to me. वो जो Lord Shiva आने वाले थे, Lord Shiva himself कि धरती पे प्रकट होंगे, they'll talk to the characters, वो हमने फिर drop कर दिया because of not lack of evidences, lack of facts, because ये तो fictional story है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. But didn't make sense. It didn't felt like कि ये इसी universe में belong करता है. ये जो भी incidents होने वाले थे. So to keep the story grounded, the book grounded, हमने उसको drop कर दिया. Developed another character around it, and wow, जब book में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा. Okay, तो before wrapping the podcast, आप हमारे listeners को कुछ कहना चाहोगे? Yes, a message to all the listeners of this podcast, यार, कि Mohit is doing a really wonderful job. He's passionate about his podcast, and the quality of his podcasts are also good. He doesn't stick to one particular topic. His podcasts are different, with different topics. I've seen his podcasts. It's really good, and I urge everybody who's listening to it, or will be listening to it, to share, subscribe, like, comment, and spread the word about his podcast and the podcaster show to everybody in your group, because it needs to be there. The topics that he cover, it needs to be heard, needs to be watched, and this is the thing that I would like to tell the all the viewers of your podcasts, and also read the books. Yeah, that's the one thing.